everyone, how are you all? I hope that you all are fine. So today we are going to start a new topic, that is world around us, in which we are going to talk about various things that we see in our surroundings. But wait, I want you to do an activity. Observe your surroundings carefully and write 10 things that you have observed in your environment. I hope that you must have observed many things around you, like table, ball, grass, children, plants, soil, tent, trees, right? Or many more, such as door, windows, fan, bucket, right? So I have a question for you, that are all these things similar, or there is a difference among these things? For example, if I give you two options like peacock and table, are both of these similar or there is any difference between these? Yes, there is definitely many differences among these. For example, while peacock can breathe, table cannot breathe. Or while peacock can move, table cannot move without any external force, right? पिकॉक तो खुद ब खुद चल सकता है, लेकिन टेबल तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक उसे कोई और, जैसे कि मैं या आप या कोई और ह्यूमन, जब तक उसे मूव ना करे वो मूव नहीं कर सकता, राइट? सो द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस, we can classify these things into two things. First is living things and second is non-living things. So today we will study about these things only, living and non-living things. First, let's move towards living things. These are some examples of living things. Animals, birds, plants, humans. When you will see all these things, you will find that there are some similarities between these. Let us find that what are living things and what are its characteristics. Living things can breathe, यानी कि living things सांस ले सकते हैं, जैसे कि birds, animals, plants, humans. आप और मैं भी तो ह्यूमंस है ना, हमें भी तो सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, राइट? उसी तरीके से प्लांट्स को भी होती है. तो लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ. लिविंग थिंग्स ग्रो. आपने देखा होगा कि ह्यूमंस हों या प्लांट्स हों, दे ग्रो. फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमंस फर्स्ट देयर इज़ अ बेबी, देन दे ग्रो इनटू चाइल्ड and they grow into men, right? And similarly plants also grow, right? And in this way we also see that animals or birds, all the living things grow. Now, living things can move. We must have seen that all the living things can move. For example, animals, birds, right? Living things can reproduce. Living things can give birth to their child, right? For example, humans, animals, birds, right? They all reproduce. Living things need food and water to live. हमने पहले भी ये पढ़ा है कि किस तरीके से हमें या एनिमल्स को या बर्ड्स को या प्लांट्स को जीने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत होती है. तो लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव. नाउ लेट्स मूव टू नॉन लिविंग थिंग्स. These are the examples of non-living things. Clothes, books, table or car. So let's study that how these are non-living things. Non-living things cannot move without external force. So you must have seen that car can move, right? हम तो रोड पर कार को बहुत देखते हैं, लेकिन कार खुद ब खुद नहीं चलती है, राइट? उसे कोई ना कोई ह्यूमन
चलाता है. So non-living things cannot move without any external force. Also, non-living things cannot breathe. Non-living things cannot grow. Non-living things cannot reproduce. Non-living things do not need food and water to live. यानी कि लिविंग थिंग्स में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में वो सभी एब्सेंट होती हैं, राइट? क्योंकि वी हैव सीन दैट लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ. While living things can grow, non-living things cannot grow. While living things can reproduce, non-living things cannot reproduce, right? So all these things are differences between living things and non-living things. Now there is another activity for you, that you try to classify the things around you into living things and non-living things. यानी कि आपने जितनी भी चीज़ें पहले ऑब्जर्व की थी, अब आपने पढ़ लिया है ना कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, तो उस बेसिस पर आप उन्हें क्लासिफाई कीजिए कि उनमें से कौन सी थिंग्स लिविंग थिंग्स हैं एंड कौन सी थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं. थैंक यू.